Okay, so the time is around 10:30 and uh, let me show you the positions that we have open as of now. So let's just open up the positions. Right. So these are the open positions that we have right now, and this pretty much clearly says that we have a decent probability of profit. 81% probability of profit है. तकरीबन 5.6 लाख के आसपास कैपिटल इन्वॉल्व है और हमारा लोअर साइड ब्रेक इवन 17,800 के आसपास है एंड द अपर साइड ब्रेक इवन इज अराउंड 18,600 approximately, and right now I don't think there's any adjustment needed in the position. So these are the current running positions. It's very much neutral as of now, and let's see how does it go. We have all the sell side positions standing at 17,800 puts, 17,850 puts on the downside, and we have the open call side sell positions at 18,500 calls and 18,550 calls. All the positions are hedged. सारी पोजिशन hedge लेके चल रहे हैं, मार्जिन का पूरा बेनिफिट लेके चल रहे हैं. The objective is to generate around 1% return from the ट्रेड सेटअप. सो डेफिनेटली द एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर फ्लैट भी रहता है मार्केट एक्सपायरी तक, फ्लैट एज इन द रेंज ऑफ 17,850 टू 18,300, अगर इस रेंज के अंदर रहता है तो अप्रॉक्सीमेटली 1.1-1.2% रिटर्न के आसपास हमको मिलेगा आरओआई ऑन आर capital, which is actually fine. Most of the people actually ignore what they can, most of the people actually underestimate what they can achieve in long term, and they overestimate what they can achieve in short term. That's the major problem with option traders. Option buying is not the answer. The answer is hidden in learning the option selling strategies, right? So at the TMT club, we just had a live session a few moments back, and from morning 9:15 to 10:30 every day we'll have live sessions with the Millionaire Trader Club members. If you don't know what the Millionaire Trader Club is, let me show you here. It's an exclusive Discord community. We just finished up with the live session a few moments back, and you see it over here. So at 9:15 we started it, and we created the strategy with our members. So there is a place where we discuss, analyze everything that's happening in the market, and we build live trade setups with each other every single day. And this is the perfect place for you अगर आप एक्चुअली सीखना चाहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग के थ्रू, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज के थ्रू अपने कैपिटल को कैसे ग्रो करा जाए. बिकॉज ऑप्शन सेलिंग गिव्स यू अ पावर ऑफ जनरेटिंग 1%, 1.5%, इनफैक्ट अप टू 2-3% रिटर्न्स एवरी वीक. सो लेट मी शो यू हाउ 2-3%. यहाँ मैंने आपको दिखाया 1% के आसपास का रिटर्न इस एरिया में हमको मिलेगा अगर एक्सपायरी दैट इज थर्सडे अगर आता है तो, राइट. बट ऑन द अपसाइड if the market moves a little bit further upwards, 18,300 के ऊपर अगर मार्केट ऊपर मूव करना चालू करता है, so our return investment will increase by twice the current level. So 7,000 की जगह 14,000 के आसपास वो ROI आ जाएगा, and that is around 2.2-2.3% on the overall capital that is engaged into the trade as of now, right? So open positions अगर मैं आपको दिखाऊं, these are the open positions which is pretty much running neutral as of now. So we'll wait for the day as a day will pass by. I'll keep you updated. निफ्टी की अगर हम बात करें जाके चार्ट्स पे, so निफ्टी has actually given a good gap up today opening, a good gap up opening today, and gap has been already filled. ठीक है, जो गैप आया था मॉर्निंग में, गैप निफ्टी ने क्रिएट किया था, वो ऑलरेडी फिल अप हो चुका है, एंड विच आई बिलीव इज अ गुड थिंग बिकॉज दिस जोन इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट एज ऑफ नाउ. अगर ये सपोर्ट का जोन ब्रेक डाउन होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट स्ट्रांगली आएगा सेंट्रल पाइवेट रेंज पे या मिडिल पाइवेट पे. ठीक है, दैट इज 18,045. अगर 18,045 ब्रेक डाउन होता है फॉर एनी रीजन, सो वील टेक सम एडजस्टमेंट ट्रेड्स टू आवर ऑप्शन ट्रेडिंग पोर्टफोलियो फॉर द वीक, एंड until then we'll just stay quiet, we'll do nothing. On the upside we have a large break even, 18,500 के ऊपर हमारा break even, so I don't think we need any adjustment up till 18,352 resistance is broken. On the downside we don't need any adjustment until 18,050 is broken. तो जब तक इस range के अंदर है market 18,050 से लेके 18,200, we will be doing nothing. And let's talk bank nifty as well. So bank nifty में क्या हो रहा है ये भी discuss कर लेते हैं. Bank nifty has taken support exactly at the long term trend line. So how did the long term trend line come? Let me show you. On the 1 day time frame, if you can see, we have this long term trend line from this level. Let me shift to 1 hour time frame for much clearer visibility. Can you see this long term trend line? काफी समय से resistance face करता आ रहा था बैंक निफ्टी, and now it has broken out today, but again the breakout could not sustain. It came down and took support from this long term trend line today, right? So on the 5 minute time frame, let's see how is it performing. As of now, Bank Nifty has broken the day low, and I sense that Bank Nifty will take support around in this zone, central pivot range और trend line के आसपास support लेके यहाँ से
पुल बैक ले सकता है. गैप अगेन इट हैज बीन फील्ड इन बैंक निफ्टी एज वेल. ओपन इंटरेस्ट डेटा की अगर हम बात करें, सो इन निफ्टी लेट मी शो यू द ओपन इंटरेस्ट डेटा इन निफ्टी. निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट डेटा इस समय क्या बोल रहा है? इट्स क्लियरली शोइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन निफ्टी एट 18,000 लेवल्स. 18,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, बट 18,200 पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस भी है. सो व्हाट आई बिलीव इज दैट 18,000 से 18,200 की जो रेंज है, ये आज के लिए कहीं ना कहीं हो सकती है. आई विल कीप यू पोस्टेड. द टाइम इज 10:43 एज ऑफ नाउ, सो स्टे ट्यून्ड. Okay, so the time is 12:15 around, and Nifty is trying to currently hold on to the hold on to the position of 18,100 as a support. 18,100 के आसपास निफ्टी आके सपोर्ट ले चुका है. नाउ द थिंग इज दिस पर्टिकुलर जोन वाज एक्चुअली yesterday's close after a stellar rally on last trading session. Can you see on the last trading session Nifty had a good rally from approximately the low of 17,900 to the high of 18,000 approximately 123, and it gave a close around this level. 18,100 के आसपास क्लोज दिया था. वहीं कहीं से निफ्टी ने सपोर्ट लिया, प्लस यहाँ पे सीपीआर का सपोर्ट भी अवेलेबल था, प्लस वी हैव अ 50 exponential moving average standing here on 15-minute time frame as of now. So even on 5-minute time frame, let me actually show you. So even on 5-minute time frame, we do have 50 exponential moving average as of now over here. Now Nifty has to sustain this level. 18,122 का लेवल सस्टेन करना जरूरी है, इसके ऊपर रहना जरूरी है, तभी हम मान सकते हैं कि निफ्टी में स्ट्रेंथ बाकी रहेगी. अदरवाइज इफ निफ्टी स्टार्ट्स टू गो बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ yesterday's close, we might see Nifty actually going down to all the way to the 18,026 level, which is a 200 exponential moving average. Usually this happens when 50 exponential moving average is broken out. Nifty, for that sake, the index will try to touch the 200 exponential moving average on the 5-minute time frame. But we have to wait and watch, because currently yesterday's close is acting as a support. So what are the updates on my position? So let me actually show you. So my positions are right now, my position look like this right now. तकरीबन 6,000 रुपए का भी लॉस दिखा रहा है, बट दैट इज ऑल्सो अ वेरी मैनेजेबल लॉस एज ऑफ नाउ, बिकॉज दिस द टोटल इन्वॉल्व कैपिटल इज अराउंड 7 लाख रुपीज नाउ, एंड दिस इज लेस देन 1% ऑफ द इन्वॉल्व कैपिटल. The maximum I would take is 2%, or else I'll adjust the positions for the same. So right now I'm holding on to the trade, and I'll keep you posted. If you'll just go and look at the sector analysis, so Nifty financial services is getting a lot of hit, Nifty bank is getting a lot of hit, Nifty auto is getting a lot of hit. This we are watching everything on daily time frame. Nifty IT is definitely holding on. Can you see Nifty IT over here is definitely holding on. Nifty IT is actually making sure that Nifty remains in place. Nifty metal is bleeding, but Nifty metal is on a support. Can you see that over here? Nifty metal is on a horizontal support as of now, and if this support is broken down, I'm expecting the next support for Nifty metal at around 5478. But as of now, Nifty metal is doing fine. So it's holding on to the support, horizontal support as of now. And Reliance is also showing some weakness today on 5-minute time frame. If you'll see, let's check Reliance on 5-minute time frame. So on 5-minute time frame, even Reliance is not showing a lot of strength today. So that's one thing, right? So this we have to see. It's 15 November, and Reliance is also kind of consolidating. And other than that, almost all other sectors are like doing pretty much not so good. That's what I can say, right? Not so good. Yes, all other sectors are basically not performing so well. So let me actually see Nifty IT. Yes, Nifty IT is definitely trying to cope up, and other than that, Reliance is not doing pretty well. Nifty metal is definitely underperforming, right? And auto sector is also kind of underperforming as of now. After a major boost in morning, can you see this huge green candle? All the gains have been given up by the auto sector, as well as the banking sector. Banking sector also gave up all the gains. So this is the current position, and just what I said, Nifty is trying to take support on yesterday's close. So let's see what happens. And let me show you my positional analysis. So this is what my PnL would look like if Nifty expires anywhere between 17,800 to 18,600. That's a pretty huge range of 800 points, approximately 400 points on the downside, 400 points on the upside. It's a pretty wide range. So we'll be in good profits. So
stay tuned. I'll keep you posted by the end of the day what happens. This is a weekly positional trade. Although I'll be posting these videos daily, but still these are for learning purposes. कोई भी अगर adjustment या change आता है तो आपको रोज update होना चाहिए. Okay, so that's the purpose of these videos. So any change I'll keep you posted. The time is 12:17 and stay tuned and keep learning. And just in case if you want to learn more, we are soon going to launch our YouTube membership program. Actually, it's already open. If you'll go on to YouTube and search for Project Options or Roaring Bulls, the join button is now open and the monthly fees is 1,999. You will get access to live trading sessions every morning, 9 o'clock morning, from morning 9 o'clock or approximately 9:10. You will get access to 10:30 till 10:30. We are live and we analyze how the day can be and how the trading setup should look like. And especially if you are someone जिसको ऑप्शन सेलिंग सीखनी है, जिसको ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, कैसे ऑप्शन सेलिंग के थ्रू कंटिन्यूअस 1% से 2% वीकली ROI जनरेट करना है, अगर ये सीखना है, this is a tremendous opportunity at a very reasonable price. Earlier, the membership was for 8,000 rupees, but we have, tweaked the membership and converted into easy monthly options. So now you can officially pay us and join us through YouTube itself. It's a secure payment gateway by YouTube. And in case if you want to join, you can definitely use the join button. And I'll recommend you do it after 1 week. And not today. We are still testing. We are trying to provide as much value as we can in this membership. इसके साथ आपको around 30 hours of refined content, recorded masterclass भी मिलेगा. You can see the whole content of the masterclass over here, the kind of learning that you will get. So you can scroll down in the link over here and you can watch the whole content, what you will learn in the masterclass. There are 8 different masterclasses which cover everything from the basics of the stock market to technical analysis to our top trading strategies to our advanced option selling strategies. ये सारी recorded masterclass आपके पास available रहेंगी और साथ में सबसे important क्या है, daily live learning. That will be the most crucial part of this whole thing. So make sure that you join us and become a part of this amazing community of traders, right? And hope to see you after some time. I'll keep you posted. Whatever will be the positional update, right? So currently the position is negative 5,000 and that is pretty much manageable. Stay tuned. Okay, cool. So the market has closed and market में actually अगर आप देखेंगे तो कुछ as such हुआ नहीं. It's almost a flat day for Nifty, right? So let me show you my positions. This is how my positions look like. It's almost negative 1,800 rupees, which is like very much okay. It's a neutral position for me because if you'll see, this is the position that I hold. There's a strategy that I hold and the fund involved in the strategy is close to 7 lakh rupees. So negative 2,000 rupees is negligible. My target is to generate 1.2 to 2.3% return for the week. अगर 17,840 से लेकर 18,400 के बीच में कहीं भी निफ्टी एक्सपायर होता है, then I'll be getting approximately 1.2 to 1.3% return. And अगर 18,400 से ऊपर एक्सपायर होता है, 18,500 के आसपास अगर एक्सपायर होता है, then I'll be getting good returns of more than 2%, which is kind of unlikely. 18,500 के ऊपर एक्सपायर होना अभी मुझे दिख नहीं रहा है, but I believe my strategy right now is covering negative standard deviation 2 to positive standard deviation 2, which is perfectly fine. I don't think there's any major economic event that is going to come in this week. This is a truncated week. 3 दिन बचे एक्सपायरी में. Thursday के बाद Friday it's off. So this is how the positions look like. And in terms of the DK, 17,750 पुट्स में अच्छा DK आ गया है. Approximately 3-4-5 पॉइंट्स के आसपास का DK आ गया है, 4.5 पॉइंट्स का. और कॉल साइड में DK भी डिसेंट आ चुका है. बट द प्रॉब्लम इज DK स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं आया, उसके पीछे का एक रीजन है. एंड इफ यू गो एंड लुक एट इंडिया विक्स हैज नॉट एक्चुअली कूल्ड ऑफ. India VIX actually shot up and that is the primary reason why the decay is not there. India VIX need to cool down. India VIX is what? India VIX is the volatility index. Volatility अगर ऊपर की तरफ बढ़ेगी, शूट अप करेगी तो ऑप्शन प्रीमियम्स में एक्सपेंशन आएगा. अगर एक्सपेंशन आएगा तो ऑप्शन सेलर्स को प्रॉब्लम होगी. सो at the moment where I built my strategy was around this time, around 10 o'clock I believe मॉर्निंग में हमने बनाया था जब 9:50 और 10. उसके बाद इंडिया विक्स एक्चुअली शॉट अप बट इट
cooled down throughout the day, giving us a decent return. But टेंशन की बात क्यों नहीं थी, इसको समझने की कोशिश करते हैं. क्यों नहीं थी टेंशन की बात? Because we are covering a very wide range of 400 points positive and 400 points on the downside. So that's a pretty wide range. No adjustment was needed. डर में आके एडजस्ट नहीं करना होता है पोजिशंस को. निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, सो निफ्टी हैज ऑलरेडी टेकन सपोर्ट ऑन द 50 EMA. 29 अक्टूबर को ऑलरेडी ले चुका है और अब 20 EMA 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है. दिस इज वी आर लुकिंग एट द डेली टाइम फ्रेम राइट नाउ. Number one. Number two, if we'll go and look at 5-minute time frame on Nifty, so we can clearly see that even on 5-minute time frame, Nifty is very close to its important support of 200 exponential moving average. Also on a very important support of 18,050. 18,050 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है. अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी जाके देखेंगे, सो 18,050 इज अ गुड एरिया ऑफ सपोर्ट. यहां से ब्रेकआउट आ चुका है एक बार. ओके, सो आई एम कंसिडरिंग 18,050 इज अ वेरी गुड सपोर्ट. अगर 1850 ब्रेक होता है, ठीक है, 1850 ब्रेक होता है, 18,050 ब्रेक होता है, तो हम कुछ एडजस्टमेंट लेने की सोचेंगे. अदरवाइज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है निफ्टी के अंदर. ठीक है, कल क्या हो सकता है? आई स्ट्रांगली बिलीव दैट टुडे वाज अ डे ऑफ कंसोलिडेशन. सो टुमारो वी आर गोइंग टू सी दिस काइंड ऑफ सीपीआर. दिस इज अ स्मॉल रेंज सीपीआर. सो टुमारो वी आर गोइंग टू सी अ नैरो रेंज सीपीआर एंड द मार्केट कैन बी ट्रेंडिंग. ट्रेंडिंग अगर होता है तो आपको क्या करना है? अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो आपको 18,200 के ऊपर नजर रखनी है. अगर 18,200 निफ्टी सक्सेसफुली ब्रेक कर पाता है, देन योर नेक्स्ट टारगेट, लेट मी एक्चुअली एनालाइज निफ्टी फॉर द नेक्स्ट टारगेट. 18,200 अगर ब्रेक हो पाता है सक्सेसफुली, देन द नेक्स्ट टारगेट वुड डेफिनेटली बी 18,200 अगर ब्रेक हो पाता है, देन द नेक्स्ट टारगेट वुड डेफिनेटली बी 18,265. दैट वुड बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस. दिस जोन वुड एक्ट एज अ फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस. सो लेट मी मार्क दिस स्मॉल जोन फॉर यू. This is the area where Nifty will face a small resistance tomorrow. अगर ये भी ब्रेकआउट होता है तो 18,352 आपका डायरेक्ट टारगेट रहेगा. सो टारगेट नंबर 1 18,267, टारगेट नंबर 2 18,350. अगर 18,200 ब्रेकआउट होता है तो ये होगा. ठीक है, ऑन द डाउन साइड आई डू नॉट सी अ वेरी हेवी डाउन साइड एज ऑफ नाउ. देयर इज नो मेजर इकोनॉमिक इवेंट दैट इज गोइंग टू हैपन इन द वीक. सो आई डोंट सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाउन साइड. On the downside, I'll still say 1845 is a good support. अगर 1845 का support breach होता है तो next important support will definitely come around at 17,950. This is going to be the next support area. So let me actually mark this support area as well, right? So this is going to be the area of support. अगर on the downside, if 18,050 is broken, 17,950 के आसपास अच्छा support मिलेगा निफ्टी को. इसको हम बात कर लेते हैं from the perspective of option chain. Okay, not option chain, sorry, open interest data. So let me open up the open interest data. Yeah, fine. 18th November expiry, we are looking at 18th November expiry. So we can see that clearly a lot of call side OI buildup has been there at 18,200 levels, but strong support is still active at 18,000 levels. ठीक है, तो 18,000 ब्रीच होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है. इनफैक्ट 1850 ब्रीच होता हुआ भी नहीं दिख रहा है. और इंटरेस्टिंगली अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी देखेंगे, 25th November एक्सपायरी देखेंगे, so we can clearly see that there's a huge put side OI buildup overall throughout, right? And there's a huge call side buildup on the upside. So what I am trying to say here is that 18,000 से 18,300 की एक रेंज है जिसके बीच में हमको इस वीक में निफ्टी एक्सपायर होता हुआ दिख सकता है. ओके, विच इज अंडर आवर स्ट्रैटेजी एंड इट्स परफेक्टली फाइन. सो अगर आप भी मेरे साथ ये सारी स्ट्रैटेजीज डे टू डे लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेना तो आपके हाथ में, आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं नहीं बनाना चाहते हैं, वो आपके हाथ में. बट अगर आप सीखना चाहते हैं, देन देयर इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. एवरी मॉर्निंग आई ट्रेड लाइव विद द मेंबर्स ऑफ द मिलियनेयर ट्रेडर क्लब. यू कैन सी इट ओवर हियर एंड I trade live with them and I make sure that they understand, that they learn the whole process. So this was our today's live trading masterclass. It happened around at 9:10 a.m., 9:13 a.m. And it was a great overall masterclass for the day, right? So it was a great day. Okay. And we built that strategy in morning itself. ये जो strategy आपको दिख रही है, हमने सुबह ही बनाई थी. ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओवरऑल सेक्टर्स की. तो अगर हम सेक्टर वाइज देखेंगे, दिस डेली टाइम फ्रेम ऑफ ऑल द सेक्टर्स, दिस इज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, नॉट गुड ऑन डेली टाइम फ्रेम. इट्स शोइंग गुड वीकनेस. इट्स नॉट showing good weakness, but yes, it's kind of weak. Nifty bank was weak, even Nifty auto was weak, Nifty metal was definitely weak, and in terms of Nifty IT was the one which was holding on to the market. Can you see? Nifty IT was the one which was holding on to the market for the day. Other than that, Reliance also looked a little bit weak today, and Nifty Pharma
actually did well. Apollo Hospitals, amazing. And Nifty FMCG also did well. So Nifty FMCG, Nifty Pharma and Nifty IT were the indices that did hold on to Nifty today. Okay, now let's talk about Bank Nifty. Bank Nifty के अंदर हमने ट्रेड नहीं लिया. If you know me, you know that I only trade in Bank Nifty when I do option buying scalping strategies. Only then. ऑप्शन बाइंग की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी से आपको कुछ वीडियोस देखने तो आप पीछे जाके देख सकते हैं. बट अगर मैं सेलिंग कर रहा हूं तो मैं निफ्टी के अंदर करूंगा, बिकॉज निफ्टी इज मच लेस वॉलेटाइल इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी इंडेक्स, राइट. सो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं तो आपको क्लियरली, अच्छा चलिए पहले 1 आवर टाइम फ्रेम से आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं. ये लगातार जो आपको एक रेजिस्टेंस लाइन दिखती हुई आ रही थी, आज गैप अप के साथ ये ब्रेकआउट हो गई. ठीक है, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस, गैप अप के साथ ब्रेकआउट हो गई. उसके बाद क्या होगा, अगर ब्रेकआउट हुई है तो क्या है, रेजिस्टेंस लाइन ट्रेंड लाइन सपोर्ट में बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी. तो आज क्या हुआ, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और उसी रेजिस्टेंस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं. ये वही रेजिस्टेंस लाइन जो ऊपर चलती हुई आ रही है, प्लस हमें यहां पे क्या दिख रहा है, एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस. क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहां पे सेंट्रल पाइवट रेंज भी था. सो दिस इज टुडे. ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आपको दिखती हुई आ रही है. दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन. It broke out with a heavy strength and good gap up. नीचे आया मार्केट, it took support again from the resistance trend line, or at this point, can you see, at this point it took support. Then again it came down, it took support again at the same level, again at the same level, and eventually CPR का support के साथ close हो गया. So what I believe is that the trend line support was actually working perfectly fine. कल क्या हो सकता है इसको समझ लेते हैं. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कल क्या हो सकता है. ठीक है, पहले तो 1 डे चार्ट पे बैंक निफ्टी को देख लेते हैं. 1 डे चार्ट क्या बोल रहा है बैंक निफ्टी का. ओके, इस 1 डे चार्ट पे एक चीज क्लियरली दिख रही है, दैट दिस इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ सपोर्ट. This is an important area of support. Can you see it over here, right? 38,425, 38,500 का जोन एक important area of support है, plus 50 exponential moving average भी यहीं पे wait कर रहा है. So I don't see Bank Nifty falling below 38,500 in this expiry. Okay, that is point number 1. Now, कल क्या हो सकता है, अगर नीचे आता भी है बैंक निफ्टी, then the maximum downside is 38,500, but upside is restricted as of now to 39,000. Upside is restricted to 39,000 or I can say 39,200. This zone is restricted. Okay, इसको हम वापस 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं और वापस समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ऑन द डाउन साइड I sense that 38,450 is going to be area of support. This support over here. Okay, and this is going to be the area of resistance. ये एक रेंज हो सकती है बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए. ओके, नैरो रेंज सीपीआर रहेगा. ट्रेंडिंग हो सकता है, अगर ट्रेंडिंग होता है तो अगर आपको 39,200 ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है, देन द फर्स्ट टारगेट विल बी 39,374 और 39,400 एंड द नेक्स्ट टारगेट विल कम ओवर हियर, जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इस रेंज को डिस्कस किया. दिस वुड बी द नेक्स्ट टारगेट 39,750. ये हो गई बैंक निफ्टी की बात. सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कल कैसे ट्रेड लेना है. जस्ट इन केस अगर आप मेरे साथ ट्रेड लेना चाहते हैं, आप बन सकते हैं प्रोजेक्ट ऑप्शंस का हिस्सा. सो on YouTube you can find this simple join button over here, and you will find all the benefits. The cost is just 1,999 per month, and what you'll get is actually a lot of masterclass content. आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इस लिंक पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं इस masterclass content के बारे में, and you'll get exclusive access to the Millionaire Trader Club, जिस पे आपको डेली मास्टर क्लास, डेली लाइव ट्रेडिंग के अलावा भी ऑल डे सपोर्ट रहता है सारे मेंबर्स की कम्युनिटी का और मेरा भी और बाकी मेंटर्स का. सो दिस इज हाउ द मिलियनेयर ट्रेडर क्लब कम्युनिटी लुक्स लाइक. यहाँ पे स्विंग ट्रेड सेटअप्स, इक्विटी ट्रेड सेटअप्स जो भी हम लेते हैं या जो भी मेंबर्स लेते हैं वो आपस में शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं. सो टुडे वी एक्चुअली एंटर इनटू 2 different swing trade setups. One was in ICICI Lombard and second was in Hindustan Unilever. With logic we try to share the whole analysis. This will help you to become profitable in long run. This will help you to stay profitable in long run, right? And other than that, the main feature will be that every morning when the market opens at 9 o'clock, you will be live with me and you'll be understanding in the live market how I am trading and how you can trade well, right? Every strategy that we make for weekly positional trades, for option selling or even in equity, we discuss in the morning 1.5 hour session 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक live. So just in case if you want to join, you can hit the join button over here and become a part of the community. And anyways, I hope you enjoyed the video. Just in case आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, so here's the subscribe button. Definitely don't forget to subscribe to Project Options and Utkarsh Bhargav. That's my name over here. Thank you so much for listening to me and I hope to see you in tomorrow's analysis video. कल हमारा पोजिशनल अपडेट क्या रहेगा ये मैं आपको कल ही अपडेट करूंगा. अगर कोई चेंज आएगा, एडजस्टमेंट हम लेंगे तो वो भी मैं आपको कल अपडेट करूंगा. So stay tuned. Thank you so much for listening to me. This is from Utkarsh Bhargav.